उसने शेयर किया था टेलीग्राम में। So hi everyone, we're live right now. So this will be a AMA session, so you guys can ask and like let us know what is your current status. How are you guys feeling? I think GATE exam is just a little lower than 3 months away from us. Yeah, so you can ask your general queries, but just ask those queries only which are specifically general. Don't ask that, sir, can I prepare now? A simple answer would be you cannot prepare now. Okay. So I'm starting from zero. Can I prepare now? If this is the query, then you can leave the session. From my side, there would not be any motivation. From our side, there would not be any fake motivation. Answer would be that if you are starting right now, then you will not be able to prepare. That's it. Okay. No, if you just want to qualify GATE, then yeah, you can do it. So that's all. Test series. यार अनिल यार आप चैनल पे थोड़े एक्टिव नहीं हो गया यार अनिल प्लीज वॉच 2 days only I uploaded a video okay 2 days back only okay 2 days back I uploaded 2 videos regarding the update of test series okay Anil Kumar Swami okay so you might have missed that particular video so please check out that particular video. Yeah, Ravi Teja, like just by studying, like yeah, you can solve the questions, right? Let's say you studied basics of signals and you've studied few properties of impulse signal, right? If you're not able to remember the things after studying a new chapter, like basics of systems, then you can solve the questions from impulse signal, right? That's how you can revise. Do I really need to spend 30 hours in random variable? No, you need to spend 50 hours on that. Okay. If you want to cover in a better manner, then random variable, random process, 30 hours of content would be there, but 20 hours of effort would be there from your own side. Then 50 hours of efforts are required for random variable and random process. 30 hours is less actually. 30 hours of content would be there. To understand that 30 hours of content, then you need to solve problems as well. That much of effort is required because that would be coming for 4 marks and those 4 marks will be deciding marks. Okay. Those 4 marks will decide the rank. Not everyone would be able to attempt those random variable and random process questions. I completed all subjects, but few like digital communication, analog BJT, some most ADC are done on surface level only. Didn't do PYQs in aptitude, mathematics, and above mentioned topics. Sir. No. Like though this is not a good way of preparing. No, that's the Yeah, not a good way. okay. Like you have left this subject, that topic. Like in EDC, you have left most of it. Like the most important topic that is there that you have left. And I'm pretty sure, like in analog BJT, you are saying you have left. That means in a great detail you would not have covered MOSFET as well. I don't know from wherever you are studying from, but mostly how it is taught is that first they would be teaching BJT, then they would be teaching MOS. So if you have dropped BJT, then you would have dropped MOSFET as well, right? And then digital communication also you are saying. So most of the important topics you have dropped. Like you have studied only on surface level. So No, like for mathematics as well, you have not done the PYQs. Like mathematics is mainly practice, right? If you don't solve questions, then as of now, what I would recommend you is that like whatever that you have covered, whichever the subjects that you have covered, cover that again in a good manner. Again, yes. by again, what I mean that study everything in that particular subject, and then only proceed to the new ones. You are not supposed to drop digital communication. You are not supposed to drop MOSFET. Okay, and you are supposed to do the PYQs of mathematics for sure. Okay, so yeah. For BEL, we have taken the complete session. Expected date should be after GATE examination only After in that, March yeah, after that. or March or April for BEL. अब देखो PSU के लिए PSU के लिए हाँ निश्चय गेट के साथ कर सकते हो, बस कुछ कुछ PSU में कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे थोड़ा सा एप्टीट्यूड उसमें थोड़ा सा पूछ लेते हैं और कभी-कभी जीके वीके भी पूछ लेते हैं, ठीक है? तो पर्टिकुलर एग्जाम के रिगार्डिंग थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, बाकी सब सिमिलर रहता है। थोड़ा सा रिसर्च करो, पता चल जाएगा। Sir, please guide how to attempt test series. Attempting test series just you open the test and start attempting it. That's the way to attempt the test series. Otherwise, there would be some videos as well. Those you can follow. But this just is the learn only way of test series attempting the strategy. test. Yeah, strategies to Basically attempt test strategies, series, but those will not increase your marks. That I'm telling. Okay, those strategies will not increase your marks. They will only No, like increase our views. They will increase our views. Okay, so those no, strategies will it's not. not like that. No, like of course there is some method to it. Like if you're comfortable in that particular method, whatever you're comfortable in, do it. Like there is nothing like particular that आप अगर ये करोगे यही चलेगा, अगर ये करोगे तो नहीं.
आपके अकॉर्डिंग जो चल रहा है वो करो, ठीक है, आप स्ट्रेटेजी खुद बनाओ। Sir, I started late. Network is going on. Yesterday, you posted a video of important topics of which I plan to complete signal system control by important topics you mentioned digital fully. Yeah, you can proceed, Sohail. Sohail, you can proceed in this manner. If I spend that 50 hours in random process, do I need to solve PYQs also? In those 50 hours, you will be able to solve the PYQs as well. Okay? You will be able to solve PYQs as well in those 50 hours. After इलेक्ट्रिकल, हाँ अनिश, मतलब yeah. इलेक्ट्रिकल वाले को ईसी वाले के नहीं करने, जैसे एनालॉग डिजिटल के नहीं करने, इलेक्ट्रिकल का पीवाईक्यू ही करने हैं, ठीक है, तो आप ईसी वालों के करने की जरूरत नहीं, नेटवर्क के कर सकते हो। हाँ 38 people watching, guys. You can share, okay? You guys can share this session on Telegram group. So टेस्ट में 45 से ज्यादा नहीं ला पाता। फुल एंड टेस्ट, अभी फुल एंड टेस्ट क्यों लिख रहे हो यार? आज ही मैंने एक वीडियो बनाया था, फुल एंड टेस्ट नहीं लिखने हैं अभी, ठीक है? अभी फुल एंड टेस्ट लिख रहे हो तो नहीं लिखने यार, 45 से ज्यादा नहीं आएंगे अभी फुल एंड टेस्ट। आज वाला वीडियो देखो, 45 आ रहे हैं, ठीक ही आ रहे हैं, बट अभी मत लिखो फुल एंड टेस्ट, ठीक है ना? आज वीडियो किया है तूने कुछ अपलोड? अच्छा आज नहीं किया, वो कल जो किया। पता नहीं, रात को 12 बजे गलती से अपलोड हो गया, सुबह करना था वो 11 बजे, वो गलती से अपलोड हो गया रात को 12। रीच तो आ गई भाई, रीच तो आ गई एक्चुअली। ओके, like there is a more con there is just a preparation strategy, right, for analog VLSI profile, so you can just watch that. Please, हाँ देखो, whatever you're comfortable, if you feel like I will start with apti and I'm comfortable with that, you can start with that, okay? And don't go by that 2 marks 1 marks wala, don't go by that thing, okay? Sometimes 1 mark question is also very difficult, so don't go by that. Yeah, Mr. Perfect means like you first attempt the test only now. Okay. Let's just say you are comfortable with network analysis. So you attempt the test of network analysis and then you would realize that how much comfortable you are. You might feel that I am comfortable, but your test performance will let you know that whether you are comfortable or not. Like this, like Nikhil is saying that he got 13 out of 21 marks. So that's a pretty good score. In network second supervised test, he is getting 13 out of 21. That's a pretty good score. There is nothing called target. Okay, Nikhil, there is nothing called target. You are doing good, that's it. This is the bottom line that I would say, that you are doing good. Keep on performing in this manner. So just as you start attempting the test, you would realize that whether I'm going good or not. So keep on revising the subject, then keep on writing on the test. And EMFT and communication, you are saying that you will be doing by my guidance. In that guidance, I will just tell that these are the important topics, but I guess only 2 subjects are left. Then you can do both of the subjects comprehensively as well, if you feel like doing it comprehensively. I'm not asking you to change your strategy, but what I feel is that like so much of time is left, like 90 days, 60 days of learning is left, so you can do both of the subjects comprehensively as well, but I will be telling only the important topics. So it's up to you, but as of now your revision should be going on because 8 subjects are completed. Okay. RRBJ का नहीं पता है, like Grethron, We have like not we don't cracked. have much idea of We have RRBJ not actually. Maybe Okay. if our student cracks it, then maybe we can have a session. While what is studying, Ravi Teja, it was just studying, okay? Like we just saw whatever was working for us, and then we implemented more on that. Okay, we watched few videos. You can just search, right, gate preparation strategy. You can take few tips, and then you can implement on your own plan, own strategy. I have only to know 3 times. खैर यार 3 बार पीवाईक्यू करने की जरूरत तो नहीं थी वैसे, लेकिन आपको लगा कि जरूरत है तो ठीक है, कोई नहीं। अभी आप बताओ टॉपिक वाइज कितने टेस्ट अटेम्प्ट करो, एंड you should also study a few more subjects, right? कुछ और भी करने चाहिए, क्योंकि you have already 5 completed सब्जेक्ट हो गए, रिवाइज कर लिया, पीवाईक्यू हो गया है, बढ़िया हो गया ये सब, लेकिन और भी सब्जेक्ट करो। अगर 26 का टारगेट है, 27 है तो ठीक है, लेकिन 26 का टारगेट है तो अभी और सब्जेक्ट करो ना, ठीक है? हाँ, और टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर दो सब्जेक्ट वाइज। आप मतलब इलेक्ट्रिकल कोर तो स्टार्ट करो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपने किया है, पावर सिस्टम मशीन्स पूरा छोटा है, वो करवा यार आप, मशीन्स ठीक है ना? करो, पहले मशीन्स करो, ठीक है। हाँ, यूट्यूब मशीन्स में करो। करवाया है, यूट्यूब से मशीन्स कर लो। यूट्यूब वाली एनालॉग की यार होगी नहीं भाई, सारी पब्लिक में कर दूं तो पता नहीं फिर मैं क्या करूंगा, सब कुछ मैं पब्लिक कर दूं। बेचारे की आग देखो
आँख देखो, ठीक है, उसका आँख काला हो गया, तुम लोग मतलब बेचारे को साथ ही नहीं दोगे मतलब। या तो मैं ये कर सकता था कि लास्ट में आके हीरो बनूं, इस टाइम क्रैश कोर्सेज करवाऊं आप लोगों को, मजा आ जाएंगे आपको। ठीक है, आप लोग सब आता है वैसे एग्जाम में मार्क्स नहीं आएंगे, ये कर सकता था मैं, अब हीरो बन सकता था। या फिर मैं रेगुलरली तुम लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, इतने फ्री ट्रायल दे दिए, जिसको करना था ना इन लोग यार वो पेड से कर चुका है इतने फ्री ट्रायल्स में। ठीक है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर 3 घंटे का टॉपिक है, 3 घंटे में बैठूंगा वो कर लूंगा। और मजे की बात यह है कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर मेरी तरफ से यूट्यूब पे है, आपको बस इतना लिखना है यूट्यूब पे डिफरेंशियल एम्पलीफायर प्रेप हिमांशु अग्रवाल, आपको 3 घंटे की मैराथन की वीडियो मिल जाएगी। वो इतना तो परफेक्ट नहीं है क्योंकि वो पुरानी वीडियो है, उस समय मैं कॉलेज में था, उस समय बनाई भी है, लेकिन वो भी बहुत बढ़िया हुई, मतलब उसमें भी आपके दिमाग खुल जाएगा पूरा। तो यार थोड़ा समझा करो यार, थोड़ी तो मतलब रहम रखा करो एजुकेटर्स पे। Nand Kishore, like clash will not be there. Okay, our examination will be on the second weekend, on 14th, 15th, 14th or 15th. So clash will not be there. Like on the first weekend you will write down ESC examination. On second weekend you will write down GATE examination. Okay. Vinay, January. Jayakumar, it will come near January. Okay, full test January. जनवरी में विनय विनय Vinay जनवरी फुल Jayakumar. लेंथ। सर एक्चुअली laboratory engineer position in TI we got that company. I am a diploma student, not BTech. We have basic electronics, C programming aptitude. Guide me, what kind of guidance you require? You ask me, what kind of guidance is there? What kind of Anish, if you can think like what he is expecting, then you can ask. You simply have to study. I was also from diploma background. Okay, so you have to study basically. I think you are saying that you are not comfortable in those subjects. You have to study those subjects, right? Then you will become comfortable. And guys, like the session, please. Only 3 likes are there. अच्छा, Okay, like the session. ओह सर, देखा ही नहीं मैंने। 3 likes आए हैं यार, इतना इतने तगड़े likes। ठीक है। Scheme for my okay. अच्छा, वो 28 टिप्स इज दैट अभी स्टार्ट करो आराम से, ठीक है, धीरे धीरे पढ़ो, बढ़िया से पढ़ना, लेकिन काफी बढ़िया से पढ़ो। ठीक है, नेटवर्क पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ना है वहां से पहले नेटवर्क पढ़ो, फिर नेटवर्क के तो चलो और रिसोर्स नहीं फॉलो करने की जरूरत, लेकिन अभी धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करो, कुल मिला के ये टिप है। ठीक है, रश मत सिग्नल करना। कंट्रोल के क्वेश्चन, सर सिग्नल कंट्रोल के क्वेश्चंस ना करेगा। सिग्नल के रहने दो, ठीक है, कंट्रोल के कर सकते हो, कंट्रोल के सिग्नल कर के भी सकते हो। मतलब मेरे ख्याल से कर सकता है यार इलेक्ट्रिक का बंदा, इसी वाला। हाँ कर तो वो तो मैंने डिस्क्रीट अपने टाइम पे मैंने किया था, ठीक है, लेकिन अगर छोड़ दो। हाँ डिस्क्रीट हाँ वाला छोड़ दो, अगर टाइम मिलेगा तो हाँ हाँ, कर लो मतलब। डिस्क्रीट वाले थोड़े छोड़ सकते हो जो ज्यादा डेप्थ में आते हैं, लेकिन और कर लो। ठीक है, मतलब सिग्नल एटलीस्ट CTFS तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए, आप लोगों इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, जितना CTFT हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में CTFS यूज होता है ना पूरा। हाँ वहाँ पे वो एफएस यूज होता है, लेकिन वो फिर फॉर्मूला यूज करते हैं, मतलब वो लोग अब वो तो डेरिवेशन है तो ही कुछ है, वो करते तो नहीं मेरे को पता है। है अल्टीमेटली। ठीक है, सर एंटीना से क्वेश्चन ज्यादा नहीं बन पाते, एक बार आप यूट्यूब पे मेरा करवाया हुआ है वहां से पढ़ लो यार, ठीक है। और आपसे नहीं बन पाते सवाल ज्यादा, इवन IIT के प्रोफेसर से भी नहीं बन पाते, बनने का मतलब है सवाल फ्रेम ही नहीं हो सकते ज्यादा एंटीना से। ठीक है, तो ज्यादा सवाल आते नहीं है एंटीना से, तो इसका इतना प्रेशर नहीं लेना है अपन को कि सर एंटीना हो ही नहीं रहा है, और भी बहुत सारे टॉपिक है। तो एक बार यूट्यूब पे करवाया मैंने, वो पढ़ लो, ठीक है, एंटीना। Communication EDC network AC and 2 port left, SNS EMFT digital done, confidently revision PYQ, okay, analog control network maths revision left. I am thinking 3 hours only for new subjects rest revision. Yeah Rahul, it is fine, it is good, okay. So, what you are thinking, that is good, it's just that how you prepare that everything would depend on you, but like your preparation is decent enough. Communication EDC is left, network part whatever that is left, not a matter of concern, but at least do EDC in a good manner. Communication, we can see something about it, but at least do EDC completely. Okay, EDC completely you can do. Okay, communication we can think something about it. machine. So you are telling that you are in machines, Prakash, you have done DC transformer and synchronous. Induction,
if you have time, you can cover it totally, I would say, if you have time. But mostly they will ask in speed control, torque equation of induction machine, then the power losses. Okay, power, those things they can ask. Akshay, you can think of dropping EMFT, but don't drop EDC. Okay, EDC you do. In the EMFT, like you should be doing it as well. But first you do EDC, then we can see like whatever the time is left. Based on that, we can decide what you can do for EMFT. But EDC, you should be doing it. Okay. Enlocom, leave it on me. Something we will do. Enlocom is very easy, so don't worry about Enlocom. But EDC you should do. Okay, don't drop EDC. And don't drop Enlocom as well because that is easy. EMFT, we can do something about it, but let's take one step at a time. Let's first do EDC and Enlocom. After that, we can think of EMFT as well. Okay. Yeah, Babaji, approximately 60 marks ka. That will be approximately 60. Like you should include analog as well. Analog approximately 60 hoga, I guess. भाई हिंदी अंग्रेजी दोनों एक ही बात है, कोई बात नहीं है ऐसा कि जैसे क्वालिटी कंटेंट का मतलब से मतलब होता है वो हिंदी अंग्रेजी नहीं देखता यार, ठीक है। बाकी आपको हमारा इंग्लिश में नहीं समझ में आता तो शायद हिंदी में भी ना ही आए, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं, हिंदी अंग्रेजी कुछ होता नहीं है, स्टूडेंट के दिमाग में होता है बस हिंदी अंग्रेजी। पढ़ना स्टार्ट करेगा तो कुछ नहीं समझ में आता, ठीक है। कोई बिलीव नहीं करेगा कि मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ। 12 तक मैंने हिंदी में पढ़ाई की है। मैं इंटीग्रेशन नहीं बोलता था, मैं समाकलन बोलता था। मैं डिफरेंस बोलता था, मैं अवकलन बोलता था। एलसीएम नहीं बोलता था, मैं लघुत्तम समापवर्तय बोलता था, ठीक है। संगारित्र कवैस्टर, ठीक है। तो ये किसी को बोल बिलीव, देगा बस इनको भाई, ये क्या हाँ है हाँ, भाई इसका? मेरे को नहीं पता था कि भाई कवैस्टर बोलते हैं, लेकिन मैंने जेई भी हिंदी में दिया है। जेई में क्या होता है कि वो डायरेक्ट मतलब सीधा कन्वर्ट करते हैं, पेपर नहीं वो फ्रेम होता जेई का हिंदी में। क्या होता है, इंग्लिश में अच्छा, फ्रेम होता है, फिर वो ट्रांसलेटर डायरेक्ट में वर्ड, जाता हाँ, वर्ड बाय वर्ड। है। तो वो ट्रांसलेटर में जाता है, वो ट्रांसलेट होके आ जाता है हमारे सामने। तो अरे वो वाह। फिर मतलब उसने तो इतनी प्योर हिंदी कर दी कि इतनी हिंदी समझ ही नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने उसको कन्वर्ट किया इंग्लिश में, फिर मैंने देखा इंग्लिश में करके, फिर जाके मैंने जेई का पेपर दिया था। मतलब उसमें ऑप्शन होता है कि तुम लैंग्वेज चेंज कर सकते हो एग्जाम हॉल में। अच्छा भाई, तब तो बहुत टाइम वेस्ट हुआ होगा, टाइम होता ही वेस्ट है हुआ यार, होगा हिंदी बहुत। वालों के लिए मतलब है ही नहीं इतना भाई तो फोकस। डिसएडवांटेज है, तो डिसएडवांटेज हाँ है। ये तो है ही, डिसएडवांटेज है, अपेरेंट डिसएडवांटेज है। इवन कोचिंग में भी डिसएडवांटेज है नहीं, ना ये, अभी मतलब अभी शायद फिक्स कर दिया होगा ना, या हो अभी गया भी होगा फिक्स, पता नहीं अभी तो, यार, हु केयर्स। अभी हो गया होगा। तो ये हिंदी अंग्रेजी कुछ नहीं होता भाई। यार लोग्रिश ऑफलाइन सेंटर तो नहीं है यार, और नियर फ्यूचर में शायद पता नहीं कब होगा। Now I have seen your video that you mentioned 80 days remaining, but now only I'm doing network analysis. I plan to cover digital full signal system, control system, important topics over December end. Yeah, so hell you can do that, but you have done only one subject till now, so I'm not sure like what could be your possible approach for Gate 126. Just do whatever that you can do. That's it. Okay, because only one subject you have done and only 80 days are left. Then like 40 marks you can target, but above 40 marks I don't think in EC you would be able to target. Try getting 40 marks out of this attempt. So I had a doubt regarding I am 24 graduate preparing for It government does not exam. matter. Gap does not matter. Gap does not matter. Yeah, gap doesn't matter. Subjects now, the third round of revision. Gate prep, No, you are so saying that you have, okay. Yeah, नहीं you तो can था take. क्या बोल, no, मैं समझ नहीं रहा, like gate prep, he is saying like I'm done with subjects now in my third round of revision, first attempt in third year. मजे ले रहे सही हैं है। भाई। आप gate prep like if it is done then what you need to do is that like you attempt Attempt our the series, concept. Okay, हाँ कौन सा like है, our कौन concept सा? test is there, no concept X. You attempt that test and you let me know your score. Tonight only you should be doing that. Okay. सर ASK FSK नहीं, यूट्यूब में नहीं है यार वो, ठीक है, यूट्यूब में नहीं डाला है। जय कुमार, आप आओगे ऑफलाइन, आओगे क्या बताओ पहले। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग 2 months, बेस्ट रिसोर्स, just search gate strategy, gate 2027 roadmap या gate preparation strategy, you can get the resources. Balakrishna, for now so there is no plans, we can think about it.
Anurag, like you can take breaks in between. Like if it's like 3 hour video, right? You can take break of 5 minutes after watching a single hour of video. Like that, you can watch long hour videos. Prakash, I think Himanshu has a video of random variables from the communications. You can watch that. Maybe you will be more comfortable with that. Akshit, have you just messaged me now? And when have you bought it? If you have bought it like many months back, right? Then I cannot just suddenly change it now, right? Uh, Lokesh, I'm guessing that the seats are also lower, right? Competition is low in iron, but the seats are also lower from iron branch. Intake is lower. Yeah, so easy paper tips for electrical student. Like, don't prepare anything else specifically. Okay, prepare for your main branch. Just give your EC paper as a simple question paper only. Whatever that you know, just attempt those question paper and attempt those questions only, and your job would be done. Okay. So for the secondary branch, no matter whichever the secondary branch you are having, you don't need to prepare for the secondary branch. You prepare for your main branch only. हाँ, रविकांत सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी। हाँ यार, वो आपने बढ़िया यार, गेट प्रेप तो बढ़िया है ना। आपकी कोई क्वेरी है तो वो पूछो, क्वेरी नहीं है तो कोई बात नहीं। बढ़िया, आपकी 42 रैंक है। आप एक बार कॉन्सेप्ट टेक्स्ट तो लिख के देखो। आप, मैंने बताया ना, कॉन्सेप्ट टेक्स्ट लिखो आप एक बार। ठीक है, मेरे को लग रहा है कॉन्सेप्ट टेक्स्ट मुझे हमारे वेबसाइट पे होगा। ठीक है, वो आप टेस्ट लिखो एक बार। ठीक है ना, एक वो लिखो एक बार। क्वेश्चन था। Look, Ramdas, your SEM exams are on 24, right? And currently we are in 15. So you have around 9 days. So 9 दिन में हो जाता है SEM. इंजीनियर का 9 दिन में SEM निकाल लेता है वो, ठीक है? पूछो दोस्तों से क्या कर रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं। Like, just PYQs पढ़ लो, last 5 years question papers. Should be enough. Any thoughts on digital MOS logic question that I have covered on YouTube? Okay, you go to our digital electronics playlist, there would be CMOS logic, something like that, logic family or something like that. There would be one video, you can watch that particular video, and those digital MOS logic question would be done. Okay, so you can cover from that. I have completed most of the subjects. Now I'm stuck in the middle of revision and have to go forward for revision of subjects. And now I have practice only PYQs and yeah, practice PYQs first. Then you go to your first you do the PYQs and then you go to workbooks. PYQs, test series, and then workbook. Maths from basics. How much? What level is enough? Surface level is enough. Okay. Now, what all things are included in surface level? Like what I have to say, I would. If you see the syllabus of electrical analog and EC analog, syllabus is nearly same. But in electrical, they always ask surface level question only. Like one time they have asked one very simple question between ID versus VDS curve they gave. So what level it is enough, I cannot say, but surface level. Okay, surface level. You can study from GORs as well. Those GORs will also be enough for that. Okay, GORD people are also enough. So that's it. It's now stuck in the middle of preparation. How to? No, that is a part of your preparation. How to revise and like revision will be with the practice of the PYQs and workbook, right? Whatever TPPs they provide. So that is a part of your preparation. So solve the questions. That's all, right? And don't just study a subject and then move on to the new subject without solving the questions from the previous subject, right? Of course, you can start a new subject, but with that parallelly, you also solve the PYQs. टू स्टेज एम्पलीफायर सी में डाल दिया, कैन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम द इंटरव्यू? मतलब टू स्टेज ओप एम्प का वो आपको सर्किटरी, बेसिक सर्किटरी ड्रॉ करने का बोलेगा, इनपुट आउटपुट आपसे रेजिस्टेंस पूछेगा, ये सब तो पूछेगा ही। ठीक है, फीडबैक भी पूछ सकते हैं ना, फीडबैक के बारे में कुछ। मतलब जो आपने प्रोजेक्ट में डाला है, फेज मार्जिन, गेन मार्जिन कैसे इंप्रूव करोगे, क्या क्या फेज मार्जिन, गेन मार्जिन आपका आया था, फ्रीक्वेंसी कंपनसेशन कैसे
सही किया आपने, वो सब चीजें पूछेगा। ठीक है, तो आपने डाला है, मतलब अपना प्रोजेक्ट सही से करो, प्रिपेयर। अगर किया था प्रोजेक्ट फिर आपने सीवी में डाला है तो ठीक है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि आप अगर पूछ रहे हो इसका मतलब आपने किया नहीं और सीधा डाल दिया सीवी में। तो टू स्टेज ओपन जैसी चीज नहीं डालनी चाहिए, ठीक है ना, कभी भी सीवी में। अब डाल दिया है तो, नहीं पर शांति नहीं, पवन सर एमटेक की। वाले डाल सकते हैं, एमटेक वाले हाँ डाल सकते हाँ। हैं, लेकिन बीटेक वाले नहीं वो करते हैं ना वो, लेकिन हम डालते हैं। ठीक है, तो शांति पवन सर की वीडियो है वो देख लो, उसके बाहर कुछ सवाल नहीं पूछेंगे वो। ठीक है, शांति पवन सर की टू स्टेज की ओपन की ओनली वीडियोस है, मैथ्स तीन चार कोर्स। वीडियो, वो देख लो। ठीक है ना। दीपिका if I फॉर did नाउ, not, hmm? दैट इज नॉट अवेलेबल। 2027 मैथ्स कोर्स इज नॉट अवेलेबल फॉर नाउ, दीपिका। If I didn't start anything, can you please give suggestion on what I should do now for Gate 26 as a part of student? Nothing you can do for Gate 26 as of now if you did not start anything. Okay, you can watch the first 3 to 4 minutes of this video only. So this was the first query that I answered. Okay. आई विश टू गो इन कॉन्फ्रेंस। यार देखो, इतना नॉलेज तो हमें भी नहीं है यार, लोकेश राज भाई, लोकेश राजा भाई। ये केवल शब्द ही बढ़िया है, क्वांटम चिप, क्यू चिप्स, कंट्रोल, कंपेयर, प्योर क्यू चिप्स, वीएलएसआई एनालॉग। ठीक है, तो ये जो भी बोल रहा है ना ये सब, उसको ये पूछ लेना कि डायोड की फॉरवर्ड बायस की कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो पहले। ठीक है, और सब बाद में डिस्कस करेंगे, तो वो नहीं बताएगा, ठीक है ना। यार इतना नॉलेज हमें भी नहीं है यार कि क्वांटम चिप फील्ड क्या, कोई क्वांटम कंप्यूटर, वो 100 साल लगेगा क्वांटम कंप्यूटर बनने में, मैं पहले बता रहा हूँ, 100 ईयर्स नहीं नहीं, उतने में। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना ऐसा नहीं यार, लगेगा भाई। मैं बता रहा हूँ ना। नहीं, अभी कुछ इफेक्टिव, बोल नहीं सकते यार, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ नहीं बोल सकते तो 100 साल बोलो, फिर कुछ नहीं बोल सकते तो। वो कुछ भी हो वही सकता तो, है भाई, कुछ भी हो सकता हाँ, इतने में अपनी मौत आ जाएगी, ठीक है ना। तो है। ये क्वांटम कंप्यूटिंग एनालॉग वीएलएसआई कर लो, ठीक है, नौकरी लग जाए, जॉब करो, 5 साल बाद में आप जो कि यही बोलोगे कि कौन सी क्वांटम कंप्यूटिंग है भाई, मैनेजर ने जो कहा है वो कर लेना। ठीक है, ठीक है यार, ये सेकंड ईयर थर्ड ईयर के नहीं बंदे नहीं, भाई, ऐसा नहीं है। अगर बहुत नहीं, मजे अगर से। इंटरेस्ट होगा उसमें, अगर तुम्हारा सीरियसली इंटरेस्ट है, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, सीरियसली इंटरेस्ट है, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर या नहीं है इंटरेस्ट, ठीक जस्ट है, किडिंग। और जबरदस्ती क्या, कर रहे हो, ठीक है, फिर वो हाँ, अलग डिस्कशन है। we were just kidding, like there would be 1% of the people who are actually interested in tech. Okay, but 99% of the people are there who doesn't have any interest, they just know some technical words. So sorry, like if you are actually interested. Okay, so we were just kidding about it, but if you are actually interested, like then talk to some good person, like you can ask someone on LinkedIn that what is the future of quantum computing, so he would be better able Like to a tell. person who is working in that particular organization or similar to the job role, you can ask them. I have completed control system, digital electronics, signal system, network, in mathematics, except a vector calculus, differential equation, complex variable, EDC analog, EMFT up to transmission line, EDC analog going on, EMFT up to transmission line, completed, communication random variable completed. This is decent enough preparation, I would say, more than decent. Okay, Tarun, like more than decent enough preparation it is. Just keep on revising the things, like, and in mathematics, vector calculus was not supposed to be dropped, but in EMFT you are at transmission line, that means in the EMFT you would have got a very good knowledge of vector calculus. You should do complex variable as well. Okay. Like there is a one RPA video. Maybe you can watch that. That should be enough. Whatever quiz comes very good. Look, Rahul Kumar, you're not able to focus on revision. Revision feels boring. So this happens with everyone. Like the basic remedy would be, maybe you can solve questions. Okay, solving questions you will not feel boring. Whichever questions you are not able to solve, you go into your notes for that particular topic and then revise that particular topic. So that's how you can remove the boredom. So should I buy another? Yeah, you can buy another. Okay. Obito, don't just depend on our test series. We always recommend you can buy another test series. Our test series are just level setters. Okay, like the most difficult questions that you will face, the conceptually. क्वेश्चन कर सकते हैं, टाइम वेस्ट होगा। नहीं नहीं, अनिकेत कर सकते हो, अभी टाइम वेस्ट नहीं होगा। यू आर इन थर्ड सेम राइट, सो कर सकते हो अनिकेत, कर सकते हो। लेकिन सिग्नल कहाँ से पढ़ा है लिए तो बताओ आप। मतलब ओपन एम के सवाल, मतलब ओपन एम ना भाई, डमी गेट एजुकेटर है, मान लो ओपन एम की किताब इतनी बढ़िया है ना, और इतने उसमें सवाल है कि ऐसा लगता है जैसे गेट एजुकेटर ने बनाई हो किताब, और वो बहुत बढ़िया गेट एजुकेटर है, ठीक है ना। खैर, मतलब सिग्नल के लगभग टीचर जो भी हैं बढ़िया ही हैं सारे, लेकिन ओपन एम कॉन्फिडेंस गिरा सकता है आपका, बस मैं इतना बता रहा हूँ।
नहीं ठीक है ना? सारे बढ़िया नहीं है यार, सारे बढ़िया नहीं। सिग्नल्स के यार जितने मतलब ठीक है यार सारे, मतलब मेरे को ऐसा लगता है सिग्नल्स में तो वो बस वो थोड़े गोड वाली कोचिंग में थोड़ा सा है हाँ वीक। हाँ। इस बार वाला सवाल आया था ना, वो कर दिया भाई ने। मैं भी कंफर्टेबल नहीं हूँ भाई सिग्नल्स, मैं भी बोल देता हूँ, नहीं तो मैं बोलेंगे लोग मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ भाई सिग्नल। हाँ। Deepika, there is one playlist, Mathematics Foundation, okay, on YouTube. You can watch that. That covers the basis of mathematics. Now, if you just want to study mathematics, for yeah, you can purchase our engineering mathematics course. There also we have taught everything from basics only. It's not like I have started from like assuming that you know something. I have assumed that you are a class 10 student, and from that only I have taught every concept. भाई रिवीजन स्ट्रेटेजी की वीडियोस इतना तो डाला है अतर, like I've done the syllabus, but still I think I'm not able to remember anything. Revision you are doing, what to do. Revise. That's something that you can do. Okay. If you feel like that you are not able to recall anything, that means you need to do the revision. Okay. Revise you have to do. Revision you have to do. So just keep on revising. If your queries solve are the missed, questions. then you can write down the query. Okay. If it is missed. Sir, how hard doing it? It is not easy. Dhanush, I will definitely say it is not like your BTech. Okay, it is definitely difficult than your BTech. I have completed 8 subjects. So what to do for the next day? I have to complete the remaining subjects. So to focus 50% time to the revision, 50% time to the new subject. Okay. 50-50. DTC. 581 you Uh, can get NITs. NITs, huh. NIT Calicut you can get, I guess. EDT branch you can get in 581. But that's a like when the counseling process would come up, we will talk about it. But 581 NITs you can get for sure. Communication ADC left. Can I do it comprehensively to 31st December? Yeah. So like do keep on doing communication and ADC. Along with that, you keep on revising as well. Okay. 4 hours of revision should be there. Like 50% of that time should be given to the revision, 50% time to the comprehensive subjects. At least do one of the communication or EDC comprehensively. At least do one of them. No chance of Hyderabad or Guwahati. Sorry. In VLSI, no chance of Hyderabad or Guwahati in VLSI. At 581 score, no chance. Okay. No chance. MS में होता है क्या? MS में पॉसिबिलिटी नहीं है ना? आरएफ में यार गुवाहाटी आता है। आरएफ में शायद हो सकता है, शायद हो सकता है यार, क्योंकि गुवाहाटी आरएफ माइट बी पॉसिबल. आई विल हैव टू चेक. ओके. हाँ यार, डूड 544578 हाफिज के टी सर की वीडियो देख लो, 2 स्टेज ऑफ एम की, ये सही रहेगा. मतलब हाफिज के टी सर ने जो जो डिजाइन किया है मोस्टली उतना बोल पाओगे. उसके बाद शांति पवन सर की भी वीडियो देख लेना. ठीक है, थ्योरी वाली. ठीक है ना, थ्योरी वाली देख लेना. अहमद, फॉर दैट अब क्या पर्टिकुलर शिफ्ट। क्या आंसर करें यार इस बारे का, क्या आंसर करें, छोड़ देना, छोड़ दे. अब ये कोई बात हुई है यार, मतलब जीरो एफर्ट डालते हैं यार आजकल के बंदे. बिल्कुल भी अहमद भाई, एफर्ट डालो यार थोड़े से. ठीक है, ये क्वारी पूछने से पहले जितना इस क्वारी में आपने टाइम स्पेंड किया उतने में आपको ये आंसर ये क्वारी का आंसर मिल जाता अगर आप यूट्यूब पे ये चीज सर्च कर लेते तो, थोड़ा सा देख लेते. एक शिफ्ट में सेम एप्टीट्यूड आएगा ना, बात खत्म हुई. जिस शिफ्ट में जितने पेपर आएंगे उतने सेम एप्टीट्यूड आएगा. ठीक है, सेम कैसा सा एप्टीट्यूड, आज का पेपर आज मैं एप्टीट्यूड का पेपर दिया या फिर अगले दिन भी सेम, फिर कोई पढ़ता ही नहीं एप्टीट्यूड. केवल एक बंदा कुर्बानी देता बस. नहीं नहीं नहीं, इनके दिमाग में चल रहा है ना, कैलकुलेशन कर रहे हैं, 15 नंबर मेरे को लेके आने तो चल लूं। देखो मतलब एक बात मैं आपको बताता हूँ कि आप शायद कॉलेज के प्रोफेसर से स्मार्ट हो सकते हो, कॉलेज के टीचर से स्मार्ट हो सकते हो, बट जो भी एग्जाम आईआईटी बनाता है ना, जो भी ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम होता है, तो आप उनसे स्मार्ट हो ही नहीं सकते हो. ठीक है ना, तो आप ये सोच रहे हो कि इसने ये सोच के सवाल को सेटअप किया होगा, मैं ऐसा कर देता हूँ इसमें, तो उसको पता है कि आप क्या सोच रहे हो. ठीक है, आप कभी भी ये फालतू की चीजें नहीं ट्राई करनी चाहिए कि अपने गेट का पेपर प्रेडिक्ट करके देखते हैं, पिछले 10 साल के हमने पेपर को एनालाइज किया और उस एनालिसिस पे हमने ये पेपर को प्रेडिक्ट किया है. तो तुम्हें क्या लगता है उस आईआईटी प्रोफेसर को नहीं पता क्या ये बंदा क्या कर रहा होगा? अगर वो बंदा एफर्ट डालना चाहता है, मतलब जेई के ऐसे बंदे मैंने देखे हैं कि
मैं और मेरी टीम बैठी थी, उन्होंने पिछले 10 साल के सारे पेपर को एनालाइज किया और उस एनालिसिस के हिसाब से हमने ये मॉक पेपर डिजाइन किया है और ये हमने सिलेबस डिजाइन किया, हमने ऐसा कोर्स डिजाइन किया, आप ये कोड लगाओ और हमारा कोर्स खरीद लो 10,000 रुपए में। तो भाई जो पेपर बनाने बैठे हैं, मतलब जेई का एग्जाम तो आईआईटी वाले सीरियसली लेते हैं, गेट का तो नहीं लेते, मेरे को पता है, बट जेई का तो गेट वो का लोग भी लेते हैं, ऐसा नहीं है, गेट का भी लेते सीरियसली लेते हैं यार। पिछले 2 साल के पेपर देख के मेरे को पिछले साल का पेपर देख के तो मेरे को लग गया कि कितना सीरियसली लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो लोग भी तो सही से अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे ना, तो इसलिए उनको लग रहा हाँ है क्या मतलब ही वो मतलब। सीरियस नहीं लेते हैं, लेकिन जेई का तो वो लेते हैं। तो मैं बता रहा हूँ मैं कि अपन को कभी ना स्मार्ट बनने का ट्राई नहीं करना चाहिए प्रोफेसर से। प्रोफेसर से ज्यादा अपने स्मार्ट नहीं हो सकते और अपन को ट्राई भी नहीं करना चाहिए। ये चीज मैं बता रहा हूँ। मैं गेट 2022 की बात बताता हूँ मेरे एग्जाम की। तो एग्जाम से एक दिन पहले मेरे पापा ने पूछा था कि उस समय हमारे पहली पहली बार एमएसक्यू इंट्रोड्यूस हुआ था, मल्टीपल सेलेक्ट की, मल्टीपल आंसर हो सकते हैं एक सवाल के। तो वो पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, मतलब कल ही एग्जाम में आने वाला था। तो मेरे पापा ने मेरे से पूछा था कि कभी ऐसा हो सकता है कि सवाल एमएसक्यू दिया हो और उसमें एक ही आंसर करेक्ट हो। तो मैंने कहा मैंने जेई की इतनी तैयारी की है, जेई के सारे पीवाईक्यू सोल्व किए हैं, जेई एडवांस के किए हैं, और मैंने इतने सारे मॉक टेस्ट दिए हैं कोटा की कोचिंग के, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो मल्टीपल सेलेक्ट आया उसमें एक आंसर ही सही हुआ हो। कभी हमेशा ही ऐसा होता है कि एटलीस्ट दो तो सही होते ही हैं। ठीक है, लेकिन मेरे पापा ने कहा क्या पता हो सकता है वैसे कि मल्टीपल सेलेक्ट में शायद एक ही सही हो। नेक्स्ट डे मेरे गेट ईसी के पेपर में 4 सवाल ऐसे थे जो एमएसक्यू थे और उसमें केवल एक ही सही था। 4 सवाल। एक तो कंट्रोल का सवाल था भाई, उसमें 4 अलग चीजें पूछी थी, जीटा की वैल्यू, मैक्सिमम पीक ओवरशूट, अच्छा, अंडरशूट हाँ, और वो पता नहीं सारे क्या क्या। पैरामीटर्स बोल रहे हैं। सारे पैरामीटर 4 अलग पैरामीटर पूछे थे और उसमें एक ही ऑप्शन मैच करा था। मतलब इतना मेरा दिमाग खराब हुआ कि भाई वापस चेक कर लेता हूँ, वापस चेक कर लेता हूँ, क्या पता एक और पैरामीटर मैच कर दे। तो, तो ऐसे 4 सवाल थे उस पेपर में, 4 सवाल। तो यही कि प्रोफेसर को अपने कभी प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते। ठीक है ना, अरे बहुत कोई सवाल आ गए प्रेडिक्ट नहीं यार, कर बहुत सकते। सवाल आ गए। It's fine. Logesh, that is fine. If you are preparing for 2027, that is fine. If you are preparing for 2026, maybe you can pace up a little bit. Don't give too much. Like 5 days is too much. Maybe you can give 2 days, 3 days. Maybe you can pace up your speed. OB2, I'm trying to do 8 hours revision. 8 to 9 hours efficiently is a very good amount of study. No one, like, trust me, if someone says you that they are studying 12 hours a day, they are lying to you, right? So in a day, you will sleep at least 8 hours and you will have lunch, you will have dinner. Those things will anyways go, right? Efficiently, if you are able to give 8 to 9 hours, that is okay. That is fine. राकेश, with practice, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना रहे आप कंफर्टेबल रहोगे क्वेश्चंस के साथ, सारे सब क्वेश्चंस के साथ। तो टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करो, यू विल फील यू आर इन कि द राइट राहुल ट्रैक। कुमार का देख लेना यार, थोड़ा डाउट कि मोस्फेट उसको नहीं करना, बीजेटी भी नहीं करना उनको, लेकिन वो कह रहे हैं ईएमएफटी मेरे ख्याल से नहीं छोड़ना चाहिए इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट को। बाकी मोस्फेट बीजेटी देखो, मॉसफेट बीजेटी क्वेश्चन आसान आता है, ठीक है। मॉसफेट का डीसी एनालिसिस आता है मोस्टली, ठीक है, इसी आता नहीं है। बीजेटी का भी डीसी एनालिसिस आता है, तो एटलीस्ट डीसी एनालिसिस तो कर लो मॉसफेट और बीजेटी का। लेकिन पिछली बार मोस्फेट का एसी आ गया था, हाँ, 2 पिछली सवाल बार आ एसी गया था। हाँ, लेकिन दोनों। अब वही बोल रहा हूँ ना, अब मैं क्या बोलूँ, मतलब वही वो मैं भी बोलता हूँ, मतलब अब क्या कर सकते हो, लेकिन अब पूरा 4 मार्क्स का छोड़ने का तो मोस्फेट सही का नहीं एसी है। एनालिसिस आ गया था पिछली बार। मतलब वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि वो नोट्स के पहले पन्ने पे होता है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आया था, लेकिन आ गया था कुल मिला के। नहीं, छोड़ना रिकमेंडेड नहीं है। देखो छोड़ना तो कभी भी कुछ भी रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है, लेकिन नॉट गेटिंग इंटरेस्ट इन कंप्लीटिंग दिस सब दिस। देखो फिर आपने एनालॉग में किया क्या है, खाली डायोड सर्किट किया है और ऑप एम्प किया है, ठीक है। फिर क्या बोल, ईएमएफटी मत छोड़ो यार, ईएमएफटी कर लो एटलीस्ट, ईएमएफटी इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेटोस्टैट, ठीक है, ये कर लो। पिछले साल ही मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया था टाइम वेरिंग फील्ड से, जस्ट माइनस d5/dt करना था फार्मूला में। इससे यार अब आपने कम्युनिकेशन और सिग्नल सिस्टम छोड़ दिया, ये गलत किया ना आपने। 25 मार्क्स छोड़ दिया आपने, 25 मार्क्स। कम्युनिकेशन प्लस सिग्नल सिस्टम 25 मार्क्स। ठीक है, अभी एनालॉग रिवाइज करो, लेकिन माय रिकमेंडेशन वुड बी दैट इन पैरेलल यू शुड टेक सिग्नल सिस्टम एट लीस्ट, टेक सिग्नल्स। Like I have said that something for communication I will do, but there I put a condition as well that you should be done with the signal system. If you are not done with signal system, you cannot do communication. So I would not recommend not to drop. I would not recommend to drop
communication and signal both. Okay, so at least you should do uh, signal system as of now. Along with that, you keep on doing your analog as well. Okay, you are revising analog, then you can keep on doing that. If some queries are missed, you guys can repeat the query. Okay, if it is missed, if the queries are missed, you can repeat the query. सर AC एनालॉग पे AC एनालिसिस एनालॉग में भी यार तो ढंग बढ़िया जगह से पढ़ो, और क्या कर सकते हैं। मतलब एनालॉग का मतलब ही है ना पूरा AC एनालिसिस ही है, ठीक है ना। हाँ वो AC एनालिसिस और जो नेटवर्क का AC एनालिसिस पढ़ते हो दोनों वो अलग डिफरेंट है, है, ठीक है ना। अलग है, पूरा दोनों डिफरेंट, अलग दिन है। रात का फर्क है, दिन ठीक रात है। का नहीं, कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है उसमें उसमें। मतलब एनालॉग का तो मतलब ही पूरा AC एनालिसिस, मतलब पूरा एनालॉग पढ़ाया इसलिए जाता है कि तुम स्मॉल सिग्नल एनालिसिस बढ़िया से कर पाओ। अगर वो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब तो कहीं ना कहीं दिक्कत है थोड़ी सी, ठीक है। वो करो, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है, तब छोड़ना है तो छोड़ दो फिर, और क्या कर सकते हैं। यार नहीं यार, मतलब एसी का मेरे को आइडिया नहीं है बिल्कुल भी। यूपीएससी एसी का मैं आइडिया तभी दे पाता जब मैंने खुद अटेम्प्ट किया हो, ठीक है। बाकी हीरो बनने के लिए मैं बोल सकता हूँ कि एसी का एग्जाम बहुत सिंपल है, यूं ही रद्दी सवाल आते हैं, बट सिलेबस भी तो बहुत बड़ा है, ठीक है। अपने एग्जाम के सवाल लिए हीरो रद्दी आते तो हैं, लेकिन कवरेज मतलब इतने सारे चीजें हैं, पागल हो जाओगे याद करते करते। बस मेरा ये मानना है कि गेट और एसी की प्रिपरेशन साथ में नहीं की जा सकती, ठीक है। हाँ साथ में नहीं किया जाता, हाँ दैट इज ट्रू। रैंक आ सकता है दोनों में, बट जो बंदा हाँ ईएससी और गेट की तैयारी कर रहा था वो मेनली ईएससी की कर रहा था, ठीक है। कभी ऐसा नहीं होगा कि सर मैं तो गेट की तैयारी कर रहा था मेरा ईएससी निकल गया, कभी नहीं होगा। मैं ईएससी की तैयारी कर रहा था सर मेरा गेट निकल गया, हाँ ये हो सकता है, ठीक है। तो जो भी मेरे से पूछता है कि यूपीएससी ईएससी की क्या स्ट्रेटेजी है, तो पहली बात तो मैं ये कहता हूँ कि मैं स्ट्रेटेजी बता नहीं सकता, क्योंकि मैंने की नहीं तैयारी कभी। और दूसरी ये स्ट्रेटेजी है कि अगर ईएससी का प्रिपेयर करना है तो गेट का प्रिपेयर मत करना, ठीक है। और अगर ईएससी का स्पेसिफिकली पढ़ना चाहते हो तो हमारे कोर्स में आना मत, क्योंकि हम लोग बहुत डीप पढ़ाएंगे गेट के लिए, नहीं, और वो उतना डीप रेलेवेंट भी ईएससी ईएससी के पूछता लिए, नहीं हाँ रेलेवेंट नहीं होगा ना, है। ईएससी के लिए उतना रेलेवेंट नहीं ईएससी होगा। इतना डीप पूछता नहीं है, ठीक है ना। ईएससी ईएससी डीप बहुत ज्यादा पूछता नहीं, टफ तो नहीं है, मतलब क्वेश्चंस आसान आते हैं, लेकिन सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है। उसमें फिर वो सिलेबस बड़ा दूसरे है बस। सब्जेक्ट का ऑप्शनल ऑप्शनल भी कुछ कुछ होता है, वो सब भी और याद करने की चीजें भी कुछ कुछ होती हैं। तो हम देखो मोस्टली ऐसा तो है नहीं ना। ईएससी इज लाइक दैट सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो आपको बढ़िया से देना है, बस। देखो ये धनुष का डाउट है, ठीक है। आई एम थिंकिंग ऑफ क्विटिंग माय गेट प्रेप बिकॉज़ हाउ हार्ड एमटेक विल बी फ्रॉम आईआईटी। देखो लाइक मैं आई विल जस्ट कमेंट अबाउट दिस थिंग, लाइक यू हैव नॉट इवन फेस्ड द डिफिकल्ट थिंग्स इन योर लाइफ, ओके। सो आफ्टर यू गो लाइक गो इनटू मास्टर्स, देन यू विल गो इनटू द जॉब में एक अलग चैलेंजेस होंगे। सो एवरीवेयर यू गो राइट, यू विल गेट सम काइंड ऑफ challenges, and every time it will be a bigger challenge. So when currently you are here, right, we are guiding you, like we're spoon feeding you literally. In college as well, when you will go to masters, there will be professors, there will be your friends. Once you will go into job, again things will be a bit difficult, you have to do few things alone, so things will always be tough. So it's not like you will just quit your preparation if things are tough, right? If you are not able to recall, then you need to revise, that's it. Like if you are not even able to understand your own notes, that may also happen. Because it has happened with me as well. Like I completed my syllabus very early on, very early on. You guys will not believe, like when I was in second year I completed my syllabus, but then I saw that if I pick up my own notes, I'm not able to recall what I have written. I'm not able to get good marks in the test series as well. Then I realized that I need to study the subject again. Okay, so if you are not able to recall, then there are two things. First thing is that you did not revise. Second thing is that you were taught in a manner that you need to remember the things. Okay, actually things should be taught in a manner that not many things you should be like you should be remembering. But if you are not able to recall what you have written in your notes, then you need to study the subject again. If you feel like that, sir, I am just forgetting the content, but whatever that is written, that I am able to understand, then simply revise the notes, attempt the test series, and that would be okay. You- are you from electrical niche, a niche, are you a niche or what? Are you from electrical? Digital Pavan, sorry, it is currently, it is not, it is very difficult basically, right? Very difficult. तो अभी यार That's अपने आप अपने खुद के नोट्स नहीं रिकॉल कर पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपको वापस सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा।
Yeah, Kamaljeet, I am doing good. Like, Or what you can do, right? Gomes, you can, if you have studied the subject previously, right? We are covering it in RPOIQ. Maybe you can watch that videos. Maybe you will be able to revise. Like, not for all subjects. I've covered for mathematics, control, and network AC part. So those videos you can watch. You will be able to recall stuff. या सीमोस भी दिया प्रोजेक्ट में, तो सीमोस जितना पढ़ाया है ना उतना उतना एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब वो इंटरव्यू क्या सवाल पूछेगा ये मैं नहीं बता सकता यार, ठीक है ना। सीमोस जितना पढ़ा है उतना एक्सपेक्ट कर सकते हो बस। अब सीमोस में क्या डाला है, सीमोस में इन्वर्टर डाला हुआ आपने कि मैंने 5 वोल्ट लगाया वहाँ पे मेरे को 0 मिल गया, अगर ये चीज़ डाली है तो फिर क्या ही पूछेगा वो। अब सीमोस डाल दिया मतलब क्या डाला है सीमोस में, ये बताना चाहिए ना आपको। अब क्या पूछ सकता है सीमोस में, सीमोस में कुछ भी पूछ सकता है। सीमोस का मतलब होता है आईसी डिज़ाइन, ठीक है? तो सीमोस में कुछ भी आ सकता है। अब आपने जो प्रोजेक्ट डाला है वही आपसे पूछेगा। Pathfinder Patch, like you will get a link to get added in the Pathfinder Patch. Once you open the course, In the there will be a Telegram link. batch. Yeah, there will be a Telegram group link. You will click on that and you will be added. Okay. And also, I think someone will message you in WhatsApp. You'll get a message in WhatsApp. When will you DC? So I will be finishing my signals in a week. I have done revision of EDC and digital thoroughly, but not other subjects. Sir, I am trying my best what I can do because time is काफी less. Yeah, time is काफी कम. सिग्नल कर लिया है, सिग्नल हो जाएगा, रिवीजन ईडीसी का कर लिया है, बाकी क्या करना चाहिए, बाकी रिवाइज करो यार, एनालॉग यही करो। एनालॉग कर ठीक है, सकते हैं ना, एनालॉग नेटवर्क रिवाइज करो पहले, तो ये टारगेट बनाओ कि हाँ। नेटवर्क और एनालॉग को बढ़िया से रिवाइज करो, बाकी रिवीजन करते रहो यार, यही कर सकते हो, क्या कर सकते हो। How to increase sitting hours? Start slowly. Future. Start with 1 hour, then 1.5 hours. Then you can increase slowly. So that's how you can increase the sitting hours. Revision notes, like we have one revision X notes. Okay, those are like ultra short notes. You can maybe go through that. Take a printout of that. You can use that. Archie, no, 10 years of PIQ is not enough. I think more than that. At least from 2007 onwards. At least. भाई स्टेट एंड कंट्रोलर्स फ्रॉम क्रैश कोर्स। अनीश, वो आरपीवाईक्यू में कब आएगा? हाँ हाँ, you can do it from हो PIQ, जाएगा, yes. कर हो जाएगा, स्टेट फ्रॉम बेस हो जाएगा आराम से कर लो। आरपीवाईक्यू। लेकिन इस बार ईसी में स्टेट का सवाल आएगा भाई, पक्का ईसी में हाँ आएगा तो इस बार। जो करवाया मैंने उससे, उसके बाहर हाँ आरपीआई का जो करवाया उससे बाहर आने का हो जाएगा। हाँ हाँ, वो आराम से। देखो, Kahori is our network theory playlist enough? Maybe you can just go into the first video, right? First lecture and just watch the comments. I'll tell you, it is more. It is not sufficient. It is more than sufficient. More than. Like even after people who crack gate, then they go to masters, then they also watch those videos. So look, Anish, like Yeah, you can tell. we have it in Titans batch. We have bi-weekly Gmeet sessions. There multiple students join, and there we can give guidance, like one-to-one, exactly individual personal session we don't provide. Completed. Manikant, what you can do is that you can study from that institute only, no? What I'm saying is that you have covered this much of topic from a particular institute, you are able to solve the PYQs as well, then you should study from there only. Like, I will not be able to tell whether you will be able to understand MOSFET from here or not. Like, I'm not telling anything against to anything. Like, if you are able to understand from other institute, you should study from there only, no? Like, if you have covered some particular topic from a particular educator, then you should be covering the full subject. Like, in between, if you change the educator, that is not a good thing. Okay. So if you are able to do the PYQs and understand the chapter, then you can study from there only. This would be my recommendation. Otherwise, you can try studying from here once, and if you feel like that I'm able to understand, then it is fine. Otherwise, you should follow your same educator only. Yeah, Davu Srija, search Gate 2027 EC roadmap. You'll get a video from PrepFusion. Watch that video. कुछ भी नहीं, like PYQ test series, that is more than enough. Okay. PYQs and test series more than enough. You'll not be able to, like PYQs of common subjects. Sorry, PYQs of all the branches for common subjects. ECEI. Get electrical, any revision. भाई यार लोकेश भाई यार, आप क्या कर रहे हो? आप ही हो ना जो बार बार क्वारी पूछते जा रहे हो। तो मतलब 27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको एनालॉग करना है, अब आप ये पूछ रहे हो कि नेटवर्क में मैं क्या कर लूं कि मैं एनालॉग कर पाऊं, तो नेटवर्क पूरा कर लो ना यार पहले। ठीक है, तो नेटवर्क पूरा क्यों नहीं कर लो?
और इतना मतलब टाइम स्पेंड मत करो सेशन में, ठीक है ना। मैं ये रिकमेंडेशन आई वुड रिकमेंड इट टू एवरीवन. Like it's been, we are sitting here for 50 minutes, okay? 50 minutes are there. So you ask your query and leave. That's it. If it is answered, it is answered. If it is not answered, you can dislike the video and leave. But don't spend 50 minutes of your time in these sessions. Okay. So you study, you are preparing for 2027, then you have done digital. Why would you want to go for analog first before completing network? First do the network and then go for analog. Okay. That's it. यार हमने एमटेक इसलिए नहीं किया क्योंकि हमसे होती नहीं ना, हम दोनों एमटेक कर नहीं पाते, पास नहीं हो पाते ना हम उसमें, इसलिए हमने की नहीं एमटेक. ये रीजन है. फिर मैं एमटेक कर लेता, फिर मैं गेट फील्ड में आता, फिर मैं उछलता कि देखो मैंने आईआईटी से एमटेक किया है, देखो आईआईटी से मैंने एमटेक किया है. आईआईटी से मैं एमटेक करता फिर गेट फील्ड में नहीं आता ना मैं. अगर आईआईटी से एमटेक करने के बाद मेरे को गेट फील्ड में आना पड़ रहा है पढ़ाने के लिए, तो इसका मतलब तो खैर मैं बताऊंगा नहीं फिर क्या है इसका मतलब. जब आईआईटी से एमटेक करने जाओगे तो समझ जाओगे. ठीक है, हमने इसलिए नहीं की क्योंकि हमसे हो नहीं पाती एमटेक, हम लोग पास नहीं हो पाते दोनों, इसलिए हमने सोचा कि क्यों करनी है भाई, तो हमने नहीं की. हाँ ठीक है यार, इतना इस CMOS इन्वर्टर में इतना ठीक है यार, इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे. ठीक है, चाहे बीटेक एमटेक लेवल पे इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे. जितना आपने मेंशन किया कि वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक एसीडीसी एनालिसिस बता पाओगे, ट्रांजिट एनालिसिस बता पाओगे, ठीक है यार इतना. ठीक है. Ajay Shankar, like there is a marathon of measurements, analog instruments and CRO. So that's like around, it will be overall 13 hours. Okay, you can watch those two videos. Your measurements will be done. EMFT you can give 15 hours. Analog and digital you have to see. You can study it from any crash course or something. Communication, EMF. Each game boy, for now we will not be able to upload short notes for all the subjects, and I will be able to only complete for signals. Okay, I will think about something for electrical core. Maybe I will upload few formula notes. I will think about that. Let's see. अरे ओबीटो भाई यार आप कर लो यार, डिस्क्रीट पार्ट में कॉन्फिडेंट नहीं हो अभी तक. आप कॉन्फिडेंट हो जाते डिस्क्रीट पार्ट में. आपने 50 मिनट से मैं आपको देख रहा हूँ, शुरू से आप सेशन में हो, अभी तक आपने पढ़ा होता ना डिस्क्रीट पार्ट, आप कहते हैं कि मैं कॉन्फिडेंट हो गया. ठीक है, तो पढ़ लो ना यार. डीटीएफ टीडीएफटी में आपको दिक्कत आ रही है, आप कह रहे हो ईएमएफटी में एंटीना में दिक्कत आ रही है. तो एक तो मैंने रिसोर्स बता दिया कि यहाँ पे सब डाले हुए हैं, यहाँ से पढ़ सकते हो, लेकिन आपको वो देखना नहीं है. अब मैं आपको और क्या बताऊं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप मेरे से. ये मेरे में होता कि मेरे को जो आता है इन दोनों इन सब टॉपिक में, तो मैं आपको वो सीधा ट्रांसफर कर पाता, तो बात अलग है. ठीक है, तो वो है हो ना, नहीं सकता. अरे वो एक नोबिता का वो है, डोरेमोन का ब्रेड है, वो खा ले, मतलब वो कुछ उसमें चिपकाता है फिर खा लेता है, तो हो जाता है ट्रांसफर. ठीक है. ये क्या सब देख रहा है भाई आजकल तू ये. अभी नहीं, ये बचपन में देखा था भाई, अभी नहीं देख रहा. बचपन का चीज याद है पढ़ मेरे लो. को. ठीक है ओबीटो पढ़ लो ये सब, ठीक है ना. ये मेरा यूट्यूब में डाले हुए हैं सारी चीजें, वहां से पढ़ लो. ठीक है, वहां से पढ़ लो, हो जाएगा कवर. उसके बाद आप बोलोगे नहीं कि सर कुछ और करने की जरूरत है क्या, सर मैं और क्वेश्चन कर सकता हूँ. आप ये कहोगे कि सर ज्यादा पढ़ा दिया इसलिए मेरे को पसंद नहीं है आपका कंटेंट. ठीक है, तो आप उतना कर लो डिस्क्रीट पार्ट में. Satyajit, like very important probability, at least 2 questions, at least 2. Shreya, you are getting 50 marks. How you can improve it to 65? By studying. That's it. From 50 to 51, how will you go? How will you go? By studying. Okay. From 51 to 52, by studying. From 52 to 53, by studying. 53 to 54, by studying. So if you study well, from 50 to 65, you will go. As of now, you should not be attempting full length test series. I will make a separate video as well. That as of now, we should not be attempting full length test series. As of now, your target should be improving the subjects. Once you improve the subject, then you write down the full length test series and you will do very well in that. Okay, so improve the subjects now. Rohan, Gate 2028 course has been launched for EE. On our website, it is available. Just go into the Gate full course, scroll down to the bottom, it is available. Okay, and also like currently, if you apply the code GET 40 Gate 40 in all the Gate courses, you will get the maximum discount. And
for the placement courses, you can apply the code job20, job 20. गुड नाइट, अभी नाइट होने में टाइम है, ठीक है। कोई बात नहीं, गुड इवनिंग। मैं तो जल्दी सोता हूँ भाई। अरे गुड नाइट, अरे यार तो अंग्रेजी यार, तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती। जब भी बाय बोलते हैं तो गुड नाइट बोलते हैं यार। अच्छा मतलब ऐसा। ही इज हाँ लीविंग द जब सेशन। हाँ अच्छा। बढ़िया, तू एप्टीट्यूड नहीं बढ़ाता यार। इंग्लिश वाले क्वेश्चन तो भाई, इंग्लिश वाले क्वेश्चन तो नहीं होंगे मेरे से। ये हाँ, वो मेरे को बताया जब लीव करते गुड नाइट बोलते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा ऑड हो गया ना, अभी तो टाइम है अभी। I'm a paid course, can I DM? Yeah, you can DM in WhatsApp. Aniket, you can DM in WhatsApp. Okay. Can you please फिर some resource for CMOS inverter? Type CMOS inverter Himanshu Agarwal. You will get a full video. Okay. You can study from that. रोहन, इट विल बी रिकॉर्डेड, it will be in the recorded form. We will of course upload new content, so whatever new content we will record, right, those things also will be included. Maybe next year we, yeah, bata Yeah. kya bola? Yeah. No, you can answer. Next year like maybe Himanshu sir will take mathematics control, so that will be uploaded. Maybe I will take some new subjects, right, that will be uploaded, so those things will be there. Bata. Yeah. So when will EDC be completed? It will be completed in this month. Okay. In this month it will be completed. अच्छा तो फिर, अच्छा डूड, आपने मेरे वीडियो देख लिया तो आप कह रहे हो कि बेस्ट रिसोर्स क्या है? मतलब कि उन्होंने पहले पूछा कि बेस्ट रिसोर्स क्या है, तो मैंने कहा मेरे वीडियो देख लो, तो कह रहा तुम्हारे तो देख लिए भाई, बेस्ट रिसोर्स था ना, तुम्हारे तो देख लिए, मैं बेस्ट रिसोर्स पूछा था। मैंने ये तो नहीं पूछा था कि कोई भाई ठीक ठाक। ये बंदा जादवपुर का है, ठीक है, ये बंदा जादवपुर का है। अभी तो इसने चेंज कर लिया, इसने प्रोफाइल चेंज नहीं किया प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है, लेकिन नाम मजे चेंज ले कर रहे लिया, हैं मेरे को याद है। मजे ले रहे हैं भाई मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं। अरे हाँ भाई, सफिशिएंट आया है, लेकिन अभी 50 मिनट में आप और नॉलेज गेन कर लेते यार सीमो सेनेटर का। अभी इट्स टाइम टू क्लोज द वीडियो। ओके डूड 4578, इट्स टाइम टू क्लोज द वीडियो नाउ। ओके स्टडी, स्टडी मोर। ओके सीमो सेनेटर वाली वीडियो देख ली, और पावर डिसिपेशन वाली भी देख लेना यार। मेरे ख्याल से पावर डिसिपेशन वाली मिस कर दी होगी। 1 घंटे की मैंने अलग से की हुई है पावर डिसिपेशन की वीडियो अपलोड, ठीक है ना, वो भी देख लेना। मॉस वगैरह भी ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि सीमो से बोलते हो तो वो मॉस की फिजिक्स भी पूछ लेता है। EDC, when it will be रोहन, completed, that was answered right. It will be completed by this month. Okay. Rohan, near gate examination, maybe we will say just purchase one test series that includes the full length test. Okay, like sometimes you will get that will not cost you much, 500 rupees. Okay, near the gate exam that you can buy. No, Kahori test series. No, this is only for those test series students who have both test series. Okay, test X and test Z code are there. Only for test series student. Which is best placement or M Tech? पता नहीं है। नहीं, हाँ, so नहीं, वो बोल रहे कि ग्रुप एक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कहोरी ग्रुप एक्सेस नहीं मिलेगा, you not get the group access. कौन सा ग्रुप एक्सेस? I think doubt solving group का अच्छा बात बोल रहे अच्छा हाँ, oh sorry, yeah, okay, group access you will not be getting because a lot of students will be there, no, so we will not be able to add the students. Ajay Shankar, like if you can do, like you can just watch my video, most important topics, right? Just yesterday only I uploaded. Just watch that for double core. Don't leave it completely. Cover it from crash course. Okay. If they ask some simple questions, you will be able to solve it. Sir, I completed 7. This query is answered, Anish. I completed 7 subjects, but I cannot nahi, able to. nahi. Okay. Completed 7 subjects, but not able to solve problems. Sometimes lose confidence. How can I cover perfectly? How can you cover perfectly? You need to study. No, like what I can suggest here. Not able to solve the problems. That means there is something wrong in the way that you are studying, right? In whichever the way that you are studying, there is something wrong about that. That's why you are not able to solve the problem. So your target should be that you should be able to solve the PYQs at least. So study in a good manner, right? You need to study in a good manner. That's all. That's all you can say. And losing confidence, it happens sometimes. Like even if I prepare for GATE examination now, it happens that I may also lose the confidence. But like it will improve with time. Keep on studying, and just it will be improved with time. Rohan, don't come to the course just for the sake of guidance. Okay, guidance doesn't get you rank. So guidance and everything, we are completely available on YouTube. We are available on Telegram as well. If you just need the guidance, we are there. People join our course for the content, not for the sake of guidance. Okay. So We have chapter wise tests. Just भाई लॉन्च wait वीडियो for देख ले यार, देख लो। एम रोहन भाई लॉन्च वीडियो देख लो।
ठीक है, लॉन्च वीडियो देख लो। अरे EDC will be भूल क्यों गए? completed by November end. ABDC will be completed by November end. ठीक है, नवंबर एंड तक EDC कंप्लीट हो जाएगा। डीसी तक कहो रे, डीसी पार्ट वाला जो होता है ट्रांजिएंट तक कर लो, ठीक है, उसके बाद यू कैन स्टार्ट विद पीवाई कोर्स ट्रांजिएंट। आई थिंक More 1 queries घंटा like हो if गया, we have ठीक है। missed some query, you guys, yeah, 1 घंटा तो हो गया, You बट guys can ask, किसी query कोई रहेगी होगी तो you we can can. ask, we will stay for around 5 more minutes, उसके बाद we can end this. Yeah, so if any query is missed, you guys can put up those queries. I completed the core E part, but I'm pending with the unlock MFT measurement and still it is हो गया, started हो गया, unlock. हो गया। ये वाला हो गया था क्या? ठीक है। I guess, yeah, most of the queries are answered only. You guys can put up any other query if it is left, or you guys can like the session as well. I guess we did not miss any single query here. Yeah, there is some query was there. I'm doing job as hardware engineer where it depends so much of time. I'm getting fully trained afterwards. I cannot give time to get. I want to quit my job and give 1 year to get. What do you say? It depends on how much you are getting. Like you can let me know. Like the name is also fake, so you can let me know what is the salary you are getting. Based on that, I can suggest whether you should be dropping the job or not. Because it is like highly, like whether you should be dropping the job or not, that is highly relative actually. For some people I would recommend that you can drop the job. For some people I would recommend not to drop the job. So if you are in the session, you can write down like what is the salary you are getting. Based on that, I can tell you. Yeah, future P2J, yeah, thank you for that. Sir, you said in the remaining days we can complete 3 new subjects with revision and test. Yeah, 3, not 3, 2. 2 subjects you can do. Okay, 2 subjects. CAF, 2 subjects you can do comprehensively. 1 crash course also you can do, but 3 subjects comprehensively we cannot do. Yeah, Kahori, thank you for that. 5.5. Like, so if you can financially afford it, then you can drop the job. Okay, tricks and chaos. If you can financially afford it, then you can drop the job. Then you can prepare for GATE examination. Like leaving a 5.5 LPA job is not something that you would regret. That I can tell you. You will never regret dropping 5.5 LPA job. So if you can financially afford it, then you can drop it. ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में एक्सपीरियंस कंपलसरी है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनको फ्रेश ही हायर करना है तो वो फ्रेश ही को भी लेते हैं, बट एक्सपीरियंस वाली जॉब ज़्यादा आती है ऑफ कैंपस में। ठीक है, फ्रेशली हायर करते नहीं है ना, बहुत कम हायर करते हैं फ्रेशली ऑफ कैंपस। यार ये तो कॉलेज पे डिपेंड करता है यार, मैं कैसे बता सकता हूँ कि कोर कंपनीज आएगी कि नहीं आएगी। बीटेक वाले कॉलेजेस में आ जाती है यार, दिसंबर के बाद भी आ जाती है। ठीक है, कोर कंपनीज आ ही जाती है बीटेक वाले कॉलेज में। डिप्रेशन पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आपको पता है कि आप डिप्रेस्ड हो, इसका मतलब आप डिप्रेस्ड नहीं हो। ठीक है, जिस बंदे को डिप्रेशन होता है उसे पता नहीं होता कि वो डिप्रेस्ड है। इतना मैं बोलना चाहूंगा बस। अपनी जनरेशन मिनिमम लाइक थोड़ी सी इनकन्वीनियंस आती है उसको अपने डिप्रेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो जो बंदा कहता है वो डिप्रेस्ड है, वो डिप्रेस नहीं होता। जिसके सैड स्टेटस लगे होते हैं स्टोरी पे, वो कभी सैड होता ही नहीं है। ठीक है, तो डिप्रेशन से डील ये है, करने का यही डील है कि सोचो ही मत कि आपको डिप्रेशन है, बात खत्म हुई। हाँ मतलब कुछ और करो बाकी जिससे कुछ और करो मतलब व्यायाम करो, आप ये ध्यान लगाओ, वो सब नहीं लगता भाई। ठीक है, वो सब नहीं होता मतलब। हाँ, बात यही है कि अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लो, उससे डिप्रेशन खत्म हो जाता है। ठीक है, network signal control communication engineering mathematics doing EDC right now, sorry, MFT analog pending, digital will do
should I complete or leave EMFT? As of now, you should be leaving EMFT because analog is left, digital also left. So analog and digital should be prioritized over EMFT. Okay. As of now, this is what we can think. Later on, you let me know when your analog is completed, when your digital is completed. We can think of EMFT, but as of now, analog and digital should be given the priority. Okay. No, always a hustler. You should be preparing for gate examination as well. Okay, and your name is also hustler, and every single hustler would surely prepare for gate examination, no matter whether he is in IIT or not. Like even if it is in IIT, he would still be preparing for gate examination because you are saying only one company is visiting. Even if five companies are visiting, still you should be preparing for gate examination, being a EC student. Okay, so surely you should prepare it. If I was not having a gate coaching center, then also I would say the same thing. Best thing that could have happened to a EC electrical student, that is gate examination. So we should be always studying all 10 subjects, not only some 2 or 3 subjects. Yeah, Arun, yeah, you are doing good. Like as of now, for EMFT, we can think something else, but analog and digital should be prioritized. Okay. So I guess we can end the session now. I Yeah, guess. I guess we can Right. mostly we have covered everything. Yeah. You guys can Thank like you the guys. session. Yeah, like the session.